वो जिनके लिए कर रहे हैं, they should also. हाँ जी, it has started, sir. Yes. हेलो, बजा तो मेरे बजा स्टार्ट नहीं हुआ है. People are saying YouTube पे दिख नहीं रहा है. हाँ जी दिखेगा. रुक जा, करवा रहे हैं. We're just checking that. We're starting that only. People have joined now. We start. Happening now. It has come. LinkedIn, it has come. Yes, so it is okay. I think we should start. Yeah. Let me check with the few. So good afternoon, everyone. On behalf of Concrete Engineers Association, I welcome you all to this special technical session on the draft revision of IS 456, where we will be discussing particularly on Clause 7, Structural Materials in Concrete 7.1. And we have a very learned panel today on our dais. So I request Dr. Vineet Bajaj to introduce the panel and carry forward, please, sir. Very good afternoon to everyone, and it is my pleasure to welcome everyone to this wonderful session. Today we have with us Satish Bachani ji, excellent man, Mr. Rupesh, currently working in L&T, and Shri Sudarshan Sharma ji from Ultratech Cement, Ultratech RMC, Narendra Goyal ji, a renowned name in lab R&D labs. Abnish Mishra ji, entrepreneur and one of industry experts, industry renowned name in steel and other cement industry. And last but not the least, the main pillar of this whole event, uh, Dr. P.N. Oja ji, who is currently working with NCCPM and has been member of various technical committees of BIS, including 456 and 383 and other committees. So today's session is basically all about how we have evolved with 456, which was last published in 2000, year 2000, and what all changes has happened, how this is gonna reshape or redefine the infrastructure industry jawline, and how engineers need to apprise whether those are working with infra in markets, infra industry, whether those are in RMC industry, cement industry. So how this complete new code is going to reshape our infrastructure or industry is very important. And I request Muja Saab to take the center stage and enlighten us with what are the basic changes, major changes which will happen, which will be happening, and later on we'll start with concrete and its ingredients. Oja Saab, on to you, sir. Thank you, Vinit ji. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah. So if you will see the 456 history of 456 a little bit, so it was first time published in 1953, and then just after in 1957, and then third revision was in 1964. In fourth revision 1978, if you will see, the a little bit major changes happened in terms of limit state method of design came into existence in 1978. In 2002, the acceptance criteria and durability of concrete, all those were included. The title is Code of Practice
structural concrete code of practice. Earlier it was uh, reinforced and plain concrete, but now this time it is a structural concrete code of practice, and it includes all the three: plain, reinforced, and pre-stressed concrete. So the pre-stressed concrete, which is the right now the standard is existing, that is also going to be merged. And after publishing this IS 456, that pre-stressed code, if I remember correctly, 1493 perhaps, that will be withdrawn. Okay, so all the provisions of the pre-stressed concrete is also being included here, and the existing standard on pre-stressed concrete, which is right now existing separately, that will be withdrawn after this will come into existence. Okay, the second is the basis of design has been changed. So basis of design means earlier there were three criteria of design, like strength, durability, and serviceability. Now the other three has also been included, and now there is a sixth criteria. If you have a questions, you can stop me in between. Okay, so now that six criteria: strength, serviceability, and durability, which was in early 2000 standard also. But now these three additional: robustness, integrity, and restorability. These three additional criteria has been added this time, and each criteria deemed to have been designed for. If the structural design is demonstrated to meet the requirements laid additional three criteria. So now there are six criteria for design of concrete structure. Okay, and third is from concrete grade of concrete point of view. The high strength concrete has also been included. If you will see, the grade of concrete is not now only up to M60, it is beyond that. Okay, so up to M100. So the general basic principles are maintained, almost similar. If you will see, the axial force and bending moment capacity are based on strains, and shear force and torsional movement capacity on strength. But the method of estimating movement capacity has been improved. So the method how to estimate, because this code is for uh, design of concrete structure, plain, reinforced, and concrete structure. So the clause 7 deals with the material, and other clauses deals with the structural design, and then durability, and then special concrete. If you will see we will see in the subsequently in our discussion what are the various chapters is, but right now the salient changes which has been taken, that I am enumerating. So the method of estimation of movement capacity has been improved, and that is based on the principle of mechanics, by considering the limiting strain in steel and concrete both, instead of secondary compression failure of strain of concrete. Okay, so this major changes in the philosophy of estimation of bending moment has itself changed. The fifth salient changes is that all design strength value of concrete and steel are provided in the form of expression, and now showing explicitly the partial safety factor gamma m for material. Okay, so this is also changed, and if you will see the clauses, then after looking at this, the major changes, then it will be easy for us to point it out and understand what other changes has happened. So if you will see the sixth point, in the limit state of strength, the definition of design strength under flexure for a concrete member is revised
from that corresponding to secondary compression failure of member, to that corresponding to reaching limiting strain. Okay, so this philosophy is also changed. Now, seventh is in earlier in the existing 2000, there is a exposure condition durability. With respect to durability, I am talking. So there is a exposure classification that is generic in nature, not with a specific to the deterioration mechanism. So in this revision, the concept of design for durability is coming. How we can design a structure for a certain life, let's suppose 70 years or 100 years. So how to design the concrete, and then uh, concrete structural member also. So from that point of view, the service life design concept has also been introduced in this changes. And to take care of that, the deterioration mechanism as a specific exposure classification has been brought here. If you will see the durability chapters specifically, so we have a certain classification for carbonation induced corrosion environment. Then we have 7 classes of with respect to chloride induced corrosion environment, sulfate environment, freeze thaw environment. So all those classifications. So now it is not like mild, moderate, severe, very severe, and extreme, but it is deterioration mechanism a specific classification, not generic like mild, moderate, severe, very severe, and extreme. Okay, so classification is deterioration specific in this version. And and for up to 50 years of service life, we have a tabular form from where we can choose the cover depth or grade of concrete or cement content or all that. But when we will be designing a structure over and above 50 years, then we will have to design it for durability. And there are the method which has been given, and this method is particularly with respect to reinforcement corrosion, when structures are subjected to reinforcement corrosion in that kind of environment. Because for reinforcement corrosion, mathematical model is available, and with respect to time, a relationship can be established, and from where the input and output can be drawn, and a structure or a structural member can be designed with a specific type of concrete which will provide the resistance against what is required for the structure for that particular service life. So this is a major change with respect to durability of concrete, if you will see the durability chapter. So conceptual changes in the durability approach. Okay, the eighth changes is the provisions related to serviceability, blast resistance, and impact resistance, and the fire resistance of concrete has also been brought here and rationalized particularly. With respect to fire, a cover and all that was a little bit there in 2000 version also, but in this version it is a specific, and in certain cases how to calculate the fire resistance, that has also been brought here, if you will see that the particular chapter. The ninth significant change is the modulus of elasticity, and which is 10% higher for M20, 5% higher for M25, and up to 10% lower for higher grade of concrete up to M80. So new expression has been provided. Okay, and with respect to that, we can see how for design the modulus of elasticity of concrete can be calculated. So this is a new formula which has been introduced this time, and there is this formula is a little bit has a deviation from the existing one. The 10th change is
how to get the creep coefficient and making correct with calculation. So this two two changes is very significant. So estimation of creep coefficient and the creep, yeah, and the crack width calculation. So this is a significant change, a 10th significant change. To go into detail the changes, one will have to see that particular sub chapter. Now 11th changes is the requirement are provided on the need to ensure constructability of concrete structure. So there is a specific chapter has been given. Okay, the provisions related to construction and quality assurance had been rationalized and based on different level of quality assurance. So the quality assurance, there is a 3 level of quality assurance has been included, and that chapter significantly different, which is not at all in the existing IS 456 2000. Okay, and the last changes, there is a separate chapter on special concrete. So how, in which circumstances, what are the special concrete, those special type of concrete and their salient features has been mentioned, and there is a special chapters, and then the committee will deliberate in detail uh, whether the are uh, appropriate, and corresponding to that what action can be taken in the revision of this draft standard. So this is brief. Over to Dr. Binit ji, how we should proceed our discussion. Thank you, sir. Thank you for this brief introduction about the major significant changes. Uh, I think I'll now open the platform for anyone, Rupesh ji, Avnish Mishra ji, Goyal Saab, Vachani Saab, to briefly give their thoughts about the same. Then I can also pitch in. Let's open the platform before on this for discussing these 13 points, and then we can look about the main crux of today's event, that is clause number 7.1. So anyone, please. So, Dr. Badraj, I would like to add to Mr. Oja's point where he was discussing about the point of creep. So, creep in large infrastructure projects and others always have been a point everybody talks about. So, if it is now related while evaluating to the width of the crack, I think that will give more benefit to the structural designers when they design the long-term durability and other aspects of structural benefits. Thank you, Mishra ji. Uh, I think just what sir have suggested, like this is a very good initiative by the BIS, that in principle now the design Mm. will be based on strain Yeah. for moment capacities and shear force and torsional moment for strength. Earlier also it was done, so there was a limit kept for uh, deflection of beam or slabs. Uh, but now, as he has suggested, that since structures uh, life or lifespan for which it is being designed has been considered, so the criterias of robustness, integrity now also comes into picture, because as I remember, when the 456 2000 was designed, it was basically for strength, serviceability. Serviceability criteria was already there.
Durability criteria strength was there, but robustness was missing. So that's a very good initiative by the government this time, BIS, understanding that a structure which is designed for 20 years will have different uh, properties, or structure which used to be defined for 40 years has to be done with different properties. So you cannot have two structures with different lifespan having similar properties. So that's a very good initiative by the BIS. Anyone else? Rupesh ji, uh, please unmute yourself. Good afternoon, everybody. Yeah, actually, one point I was just looking at, I think this is further there in 7.1.4.1, which is modulus of elasticity. So if you calculate the modulus of elasticity as per the new formula given, Yes. to me it appears that these are a little lower, because for M40, if we look at this comes to 30.6 GPA, and for M60 grade it comes to 34.11 GPA. Normally, the designers, even for the high-rise buildings, especially if I look at the recent some of the reviews, they consider a much more higher modulus of elasticity. Now, considering this lower modulus of elasticity as per the new guideline, whether it will have a huge impact in terms of designing of the structure as such, and presently, even at the field, people are able to get, like for M60 grade, at one of the project, the requirement was 45 GPA. So 45 to 34 GPA is a good, you can say, difference, good lowering of the values, and whether it will have a significant impact in terms of the designing. So I think Ojaji, if can briefly uh, enlighten about the various modulus of elasticity being considered. Oja And Saab? this value modulus of elasticity, short term static characteristics value of modulus of elasticity, ECK. ECK is 10,000 FCK to the power 0.3. yeah, This is the formula right now. Okay, yes. right now in the draft standard, Hmm. and this is valid for concrete made with quartzite and granite aggregates only. If you are using limestone and Hmm. sandstone aggregates, the value should be Hmm. reduced by 10% further Correct. and 30% respectively. 10% for limestone and 30% for sandstone. For basalt, the value should be increased by 20%. So this 20%. Yeah. modulus of elasticity is now dependent on aggregate type which you are using in concrete. Because what is the modulus of elasticity? If you will draw the graph, the it will be like this, like paste, and this, and middle of the value is for the concrete. So for in this situation, we will have to see this which type of aggregates we are using. Further, in terms of the value which will be used by designers, one can make a comment. A structural designer can make a comment, and committee will again review, because this has been revised based on the numerous data which has been generated in the laboratory. It is not like there is a wish to change. So what structural designers are doing, this should come from the experimental value. In laboratory, the various grade of concrete has been cast, and the strength has also been determined, and modulus of elasticity has also been calculated with different type of aggregates. So if anyone would like to comment, because this is the draft, so anyone can comment why this value should be changed, and this provisions is not uh, with with respect to the existing literature, or in real practice.
Okay, so but this change has come from the experimental value right now. I can say up to this only. Thank you, sir. Okay. Uh, I request, Vachani sir, you wanted to say something, sir? Yeah. If otherwise, I request others to please keep themselves mute. Uh, if shall we move forward, or anyone has other comments about these 13 points regarding design and others? If you will see, the page number 63 of the draft, and this draft is about the grade of concrete. So grade of concrete, earlier the committee was discussing up to M100, but with the certain reservations on some properties with respect to uh, their ductility and their performance in the earthquake resistant structures and all that. So based on that, it has been accepted up to M80 grade of concrete. But earlier, if you will see, the internal draft, which was circulated in all the committee members, we worked in the working group up to M100, but it has been accepted up to M80 grade of concrete. It has been accepted. And public comment. Okay. If anyone would like to that M100 should be included and why it should be included, those comments can also be. So it is up to all of you to make a comment. As a committee member, means I cannot say anything because I cannot reveal all the discussions which has happened, why it has not been and why it is. So anyone can comment. But philosophy, what is the philosophy behind the inclusion of all these things, that I can explain to anyone. Shall we move forward, or any other panelists have to have any other suggestion regarding the same, please? So, Dr. Saab, I would request we'll take up this 7.1 clause, Yeah. material by Actually, material. I want to draw your attention regarding the water because I'm from lab, so I want to draw your attention regarding the water requirement for water. Goel sir, एक Yeah. humble request, I think Yes, sir. water इसी के अंडर आता है ना? हाँ, हाँ, 7.1 मटेरियल के Yeah. अंदर आएगा, Yeah, मटेरियल के yeah, अंदर it's आएगा। just a let us go, sir, step by step. First 7.1, then 7.1 ingredients or aggregates, cement, uh, or other materials, and then we'll go to water also. वो Yeah. फिर the water is jump given नहीं in होगा थोड़ा? 7.1.3. Yeah, sir. Please, we will It is just. given in 7.1.1.3. Let's go the structure materials now. So as per the new code, I'll just read the definition for our viewers also. The minimum requirement given hereunder shall be achieved on site by ingredients, grades, testing, physical properties, mixed proportions, compositions, reinforcing steel and pre-testing steel so as to meet requirements of design and detailing specified in the standard. Structure material shall comply with the requirements laid down in the standard and in other relevant national standards so that the required performance of the structure is assured or through the design service life of structure built during these structural materials. Concrete, the ingredient grade method of testing physical properties and material properties of proportions of concrete shall comply with the requirement given hereunder. So ingredients may, we all know, we'll skip this part. Aggregate shall be complying to 383. Cement for So further. aggregate. Okay. Yes, sir, So please. ingredients of concrete. The first Yes. only been written that it should comply with the requirement of 383. IS 383. Yes, sir. And in earlier version, if you will see, there were numerous definitions and all that also. But now
since 383 has also been revised, means it is under revision, and I hope this revised IS 383 will come before this revision of IS 456 will be published. Okay, so Sir, now, can't we add lightweight aggregate? pardon. Can't we add lightweight aggregate also in this? Lightweight aggregate also. No, lightweight aggregate is not covered here. In this standard doesn't cover lightweight aggregate. Lightweight aggregate, we have a separate standard 9412 perhaps. Okay, 9416 But sir, perhaps. but in the draft it is given, sir. It is in the draft other class. It is given that lightweight aggregate can be used in concrete making. Yes sir, you are right. I'll just enlighten the audience. अगर आप इसका forward पढ़ेंगे तो forward में ये जो mix जो दिया गया है वो वहाँ पे precisely एक जगह mention किया गया है कि this code is basic for normal aggregate. Lightweight का सर अलग अलग जगह दिया गया है but more or less अगर आप इस कोड में भी है, इस कोड में भी है आगे जाके लाइटवेट एग्रीगेट का बिल्कुल है कहाँ सर, दिया हुआ है? बट मेनली जो शुरू में दिया हुआ वो यही है कि दिस इज बेसिकली कोड इज डिफाइंड फॉर नॉर्मल। हाँ जी सर, लेट मी सर, जो वो दिया हुआ है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे वो यही, दैट इज ओनली के लाइट वेट एग्रीगेट हैज नॉट टू बी यूज्ड इन स्ट्रक्चरल कंक्रीट, और इस कोड का ही नाम स्ट्रक्चरल कंक्रीट है, तो इसलिए लाइट वेट नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइट वेट एग्रीगेट शुड नॉट बी यूज्ड एज ए स्ट्रक्चरल कंक्रीट। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट इंक्लूड द use of lightweight aggregate as a structural concrete. Yes sir, okay. But if the structural, if the lightweight aggregate will have to be used as a structural concrete, then it will have a different standard, different mix design, different stress block parameter, different calculation of strength, different calculation of durability with respect to water cement ratio. So all those things are a little bit different than the normal weight concrete. That's why along with the normal concrete, that structural lightweight concrete is not being clubbed together. Okay. Sir, actually, I read the question because in class 12.3 is given, sir. मैं In class 12.3 is given. Please allow me to elaborate. Raman ji, as per this scope 1.2, I'll read out for the clarification of the audience. The provisions of this standard are applicable only to design of concrete structures made with normal weight aggregate, and not to structures made with lightweight or heavyweight aggregates. Special requirements of structures such as shells, folded plates, arches, bridges, chimneys, etc., etc., covered in respective standard have not been covered in this standard. तो जो लाइन के हिसाब से अगर फर्स्ट लाइन को हम मद्देनजर रखें तो प्रोविजंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल ओनली टू डिजाइन ऑफ concrete structures. That means that will be covered in different design codes. Yes, different made with normal weight aggregate. So I think let's proceed to the other so aggregate का सर आपने बताया, can we have a discussion on cement now? Because so anybody has sir, one second, anybody IS 383 and it will come in 3-4 months. So it is will be available in 2 now. This with respect to 2 parts, and in the first part we have all the properties of aggregate has been clubbed in 4 parts. One is physical property, mechanical property, durability property, and chemical property, and hazardous property. Okay, so the corresponding to these properties and their specification in the IS 383, there is a changes in the test method also. So right now the existing test method is IS 2386. The 2386 right now is available in 8 parts. Those will also be changed. So the 2 parts is already in wide circulation, and wide circulation date has ended, and the 2 will be in the wide circulation soon, and fifth part will be
the petrographic examination. So whole the test method of aggregate IS 2386 will be available in 5 parts. Part 1 for physical property, where how to determine the water absorption, specific gravity, flakiness, elongation, sieve analysis, all those things. In the second part, mechanical property, abrasion value, uh, uh, impact, other mechanical properties has also been included in the new version. So all the mechanical properties will be in the second part. Third part will be durability property. Durability property means with respect to dimensional changes like alkali silica reactions or expansion due to free lime or expansion due to unsoundness of aggregate. All those things are coming. And since we have included in IS 383 the industrial byproducts aggregate, so those aggregates will have to be specified in terms of the two property. One is dimensional stability and other is their chemical properties. So chemical properties part 4 and hazardous, chemical property and hazardous part 4, and the fifth part is petrographic examination of aggregate. So this in the 5-part aggregate test method will be available. And overall, the sampling method is one standard 2430 is IS 2430 is sampling of aggregates. So that has also been revised now. So this 8 standards of aggregate, five standard for test method, 2 standard for specification, and 1 for sampling method. So eight new standards will be available in 4 months. It will be published and it will be available for the users. And aggregate the old standards will be withdrawn. So this is the update on the aggregate. Okay. Thank you, sir. Thank you. Any other comment ओझा from the साहब, panel? हाँ ओझा साहब, बसानी सर. सर Yes, yes. सर वो एक पेट्रोग्राफिक में एक अभी अगर इंक्लूड कर सकते हैं तो पेट्रोग्राफी का रिपोर्ट आती है, जी जी. उस रिपोर्ट को एनालाइज करके उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन देना, कोई सजेशन देना हो, वो कोई भी नहीं, खाली एक पेट्रोग्राफी की रिपोर्ट आती है जो नॉर्मली शायद साइड में बहुत सारा क्यूसी इंजीनियर उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता, आप समझ नहीं सर पाता, वो वो सीधा फाइल कर आएगा. देता है. हाँ, आप आएगा 5th पार्ट वाइड सर्कुलेशन में आएगा. ठीक है, अभी वो प्री ड्राफ्ट सर्कुलेशन में है एमंग द कमिटी मेंबर्स ऑफ सीडी. और जब ये लोग कमेंट दे देंगे तो वी विल रिवाइज देयर कमेंट्स एंड देन इट विल गो टू पब्लिक कमेंट्स फॉर वाइड सर्कुलेशन. सो आप अच्छा, उसमें वो भी देखिएगा आएगा. और आप उसमें देखिएगा और कमेंट्स दीजिएगा. मोस्ट ठीक है, प्रोबेबली आई हैव एड्रेस्ड योर पॉइंट कि स्पेसिफिकली रिपोर्ट कैसे होना चाहिए और कैसे इंटरप्रिटेशन यस होना यस चाहिए. So यस this यस time यस in यस. the test method, I have included your point perhaps, but in spite of ओके, that, थैंक if यू. if it is left unaddressed, then you can make a comment and we नहीं, will take कमेंट care of it. ठीक है सर, थैंक यू. Thank you. Moving forward, anybody else? Should we discuss on the cement, because Simon. there is a lot of new inclusions have been done in the code with respect to cement. So Vinijji, my Hanji. humble request, need not to read all the code because our learned panel has already read the code. We should directly ask for their queries and comments on cement. So please. So yes, in Rupesh ji, cement, please. I have a comment. हाँ जी, बताएं आप गोरे साहब. फिर हाँ. रुपेश जी. Sir, there is one thing in the cement part. It says seek a specialist advice. Now the definition of a specialist, until unless it is defined and their कहाँ पर है validity सर? or कहाँ their पर है? कहाँ acceptance. पर? नहीं सर, कहाँ पर है? 7.1.1.2. 7.1.1.2 seek specialist advice कहाँ है? किसमें है? सर ये है सर पेज नंबर 64 पे. जो आपके वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट्स दिए हैं, उसके बाद अटेंशन ऑफ द यूजर्स वाला जो पैराग्राफ है सर. वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट तो पेज नंबर 51 पे है सर. सॉरी, पास पेज नंबर Definition of a specialist and Don't they have? पेज नंबर 52 पे सर. सॉरी,
पेज नंबर मैं टोटल पेज पीडीएफ रिकॉर्डिंग बता रहा था, उसमें जो अटेंशन ऑफ द यूजर्स वाला पैराग्राफ है सर, तो वो उसमें फिर पढ़ेंगे लास्ट ना। अभी 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 आपने जंप किया ना, अभी अभी पहले 7.5 7.1.1.2 को जाइए ना सर पहले। उसी पे आ रहा हूँ जब वहां पर आएंगे तो आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा। सर मेरा सर सर मेरा उसी पे क्वेश्चन आ है, रहा हूँ। मेरा एडवाइस एक एडवाइस सर मेरा एक। नहीं, रुपेश जी का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उस क्लॉज पे आएंगे तो उसके पहले कुछ कमेंट कर लें। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए हाँ गोयल हाँ साहब। मैं सर, हाँ इसमें सीमेंट को हमने बाइंड क्यों किया हुआ है कि खाली ये सीमेंट, अब नई सीमेंट आई जैसे SC3 सीमेंट आई है, तो वो सीमेंट में ऐड कर सकते हैं, इसमें लिख दीजिए कोई एनी अदर सीमेंट विच सर विच पहले में कम कमेंट्स ड्यू टू। पहले हमने सीमेंट एग्रीगेट पे क्वेश्चन है तो बोलिए। नाउ विल कम टू द नहीं सीमेंट। आई विल सीमेंट पे, मेक ए सीमेंट पे कमेंट, सर, देन यू कैन सीमेंट आस्क क्वेश्चन। सीमेंट पे, सीमेंट पे नहीं सर, सीमेंट पे। हाँ, so cement में this time we have divided cement into two broad category. यस One is general use, for general use, and for general use in plain reinforced and pre-stressed concrete. Okay, we have 6 type of cement. One is OPC, if you see IS 269, like IS 55, Pozzolana cement IS 1489, and IS 1489 part 1 and part 2 both, and then composite cement. Okay, and composite cement may there is a rider. Right now the composite cement standard is 14415, and 14415 includes the clinker up to 35%, means 65% can be replaced by slag and fly ash, but all those we are not including. We are including that composite cement that will have only 45%, 45% up to 45% clinker content. Less than 45% we are not including for general purposes in RCC work also. Okay, and in that the fly ash should not be up to shall not be more than 25%, and a minimum 28 compressive strength, 28 days compressive strength, 43. So that composite cement only the 6th Portland limestone calcined clay cement LC3. So these 6 cement is being allowed for general purpose use. Okay, and rest cement like sulfate resisting Portland cement or other cement like microfine ordinary Portland cement, hydrophobic cement, low heat Portland cement, rapid hardening, high alumina cement, super sulfated cement, white cement, all those are special purpose cement, and those shall be used only for special purposes. So this is the two broad classification we have done. Earlier the list was 15 or 16 type of cements are listed in the 2000 version, but right now those list, after including one or two type of cement, those list has been bifurcated in 2 types of usage. One is general use and one is a specific purpose use. Okay. नो सर इसी पेज पे जो द अटेंशंस ऑफ यूजर्स वाला पैराग्राफ है, उसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सीक स्पेशलिस्ट एडवाइस। ये क्वेरी थी हमारे रुपेश जी की, तो प्लीज थोड़ा इस पे ऑडियंस को एनलाइटन करिए। देखिए इसमें सर एक चीज और है, I just like to add one more thing. इसमें जो earlier some of the sentences है ना, that is not very clear because the English is in such a way that you read and it says that okay, quality, statutory quality marking, but that is not to be considered. And then further there is a suggestion that seek a specialist advice. Let us read it. I don't remember exactly. So the attention of the user of cement is drawn to the fact that quality of various cements mentioned in 7.1.1.2 is to be determined on the basis of its conformity to the performance characteristics given in the respective Indian standard specification for that cement. So this line says that this is the list, but their specification will be drawn from the respective specification of the cement. Yeah, Okay. that is fine. Then second line, any trademark or any trade name indicating any special features not covered
in the standard or any qualification or other special performance characteristics sometimes claimed indicated on the bags or contenders or in advertisement alongside, like Jangrodhak cement, this, that, whatever they claim, Rufon, this, that. There are so many claims from a respective producer of the cements. So the BIS is not responsible for those performances which are being claimed by the respective producers. This is the meaning of this line. A statutory quality marking or otherwise have no relation whatsoever with the characteristics guaranteed by quality marking as relevant to that cement. Consumers are therefore advised to go by the characteristics as given in the corresponding Indian standard specification or seek a claiming that this is over and above the BIS and this and that characteristics strength बढ़ा देता है फलना and not guaranteed that those kind of cement has been made for. So this is the meaning of this. Thank you, sir. I hope कि रुपेश जी this query is now cleared या अभी भी कुछ है तो we can dwell upon it. No, actually, because see, wordings, the English is something like a statutory quality marking or otherwise have no relation whatsoever with the characteristics guaranteed by the quality marking. So if you look at that, you are providing a statutory quality marking, and then the statement is saying has got uh, no guarantee by I the think marking as relevant to that. Statutory quality marking is that in every standard, let's suppose IS 269, what is to be marked on the bag that has been defined. Apart from that, if anybody is writing on anything on their bags, claiming properties other than that, so the for that customer can refer or customer can think of. This is the meaning of statutory marking is available on the bags, like week, year, like that. This type of OPC with this color, PPC with this color, PSC with this color. So all those definitions are there in their respective standards, and those are the part of the statutory quality marking. May I just add on to this, sir? Rupesh ji, your point is well taken. CEA will submit a few of the suggestions. We'll mark this suggestion if this language can be made bit more understandable to the audience or to the reader. ताकि students or young budding engineers जो नया नया industry who will be joining or who will be working, they should be able to understand what this basically, what this particular line tend to say. Although Dr. Oja has wonderfully explained to us, but for a broader audience, this is one of the suggestions we'll definitely put it. If this line can be restructured or redefined in a manner to make people understand in a better manner. Oja sahab, I think this will help them. Yes, fine. It's fine. Hello, Ajay Sahab, I got one more suggestion. That can we categorize this PPC cement into three categories like 33, 43, 53? Sir, Because as we are that is using now PPC, Vachani PPC we Sahab, are using for higher grades also. Vachani Sahab, that is not the purview of this committee. This committee is working on IS 456. Categorization and gradation of cement itself is the part of another committee responsible for revision of a specification of cement. Okay. So this is not I in this understand that. committee. But suppose if we are using M50 grade of concrete with PPC, and that PPC from the same source is giving you, while designing the mix, it is giving around 50-53 strength cement. All of a sudden it comes down, you can't reject it because the minimum criteria is I mean, 33. that has been addressed in the quality control. That in IS 456 only, whatever has been used and is what should be the variation as a input material is allowed, that has been addressed in the quality control. Okay. And the second thing is, a project can
there are two type of standard broadly I used to say to everybody. One is a national standard or international standard which you are following, and the another is the your project standard. Like I can give you an example. In NHAI, in IS, in IRC 44, we don't allow PPC having a strength less than 43 MPa at 28 days. So the IRC 44 mentions that the PPC only having 43 MPa 28 days strength is qualifying for the use in pavement quality concrete or in building only. Let's suppose L&T is constructing a building. The specification of that project can mention that only those PPC, sorry, PPC I'm talking about, Yes, those yes, yes. PPC which is having 28 days strength not less than 43 MPa will only be used in this project. So one is Okay, a that national or international standard and another is the project standard. project is specific. So Sir, project my standard can deal with that. sir, one point I have to raise. Sir, the similar thing which you mentioned, you have covered this in this code for composite cement, that not Yes, less than 43 grade it should be used for yes, structures. yes. So this kind of thing can also be added into 456, because generally we have a Four, cement actually, branch. composite cement, the first time it is being included in the IS 456. Okay, and this whatever it has been included in this draft, this amendment has already come for the existing IS 456 2000. Okay, from there it has been taken, and why it has been possible, because this is coming in first time and we took this stand to have this. PPC is available since long, and right now anything like this only allow PPC having 43 MPa is not easily possible, because there is another lobby also. Okay, Yeah. या सो इट्स व्हाट आप एक बार मतलब चाय और बिस्किट खिला करके और अगली बार केवल पानी पिला के भेजेंगे तो अगली बार लगेगा कि आपने स्वागत ठीक से नहीं किया। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ही केवल चाय पिलाते और सेकेंड टाइम भी केवल चाय पिलाएंगे तो वही लगेगा कि नहीं, ही इज कंसिस्टेंट इन हिज अप्रोच। तो सिमिलर इज द थिंग, एक बार आपने अलाउ कर दिया एंड नाउ इट इज इन प्रैक्टिस फॉर सिंस लास्ट 25 years, then it is up to project standard which will take it up and will use accordingly. And second is general purpose construction, individual house construction. If anybody would like to use only M25 or M30, why to give more strength? So that means the constructions are of the various type, na? Yes. So we should not waste the energy and the limestone and all that to everything in a same manner, because the quality of construction required, someone is building the construction for 25 years, some is for 50 years. So it is not consistent with the service life design also. So it is remaining that knowledgeable people can choose and knowledgeable people can frame their project standard accordingly. No, that's a welcoming step, sir, including composite cement into 456, because sustainability is also a matter which we need to take Yes, up seriously. yes, So yes, yes. I would request Abhinash sir to have his view on cement, sir. Abhinash sir, you are Hi. expert of. So Yeah. thanks for the view, Mr. Oja and others. I have been, uh, in my journey, I have been seeing that blended cement is categorized into a cement which doesn't have that 33, 43, 53 as a tag, but that has been solved now. And
composite cement to be used for individual house builders or the general purpose construction needs another revision after few years, because as engineer Dr. Ramanjit Singh Walia just now mentioned about the sustainability and green aspect. So as much as supplementary cementitious material comes in and the limestone derivative is less, it gives a lot of carbon benefit. So I am hopeful that we all together can see to it that next revision should be not only general purpose construction, it should also find some place in slender sections or where space and time can be saved in terms of green construction practices for this composite cement too. So, any other Uh, queries regarding cement? yeah, Yeah, please. Rupesh ji, please. Sir, I have just quick two clarifications, Wajah. One is in 7.1.1.2G. It is mentioned that super sulfate cement, its use is not recommended by IS 6909 when prevailing temperature is above 40 degrees centigrade. So what is this prevailing temperature? Is it the maximum? Is it the annual average, or on the day of pouring the concrete, or what it does this mean? And then I have one more question just next to that. In section K of that same clause, rapid hardening Portland cement has similar properties to that of OPC. This is something a little, not very understood, because normally OPC we consider it different from rapid hardening cement. There are Where basic properties. the second point, in which point? That is in K. So Page one is number, G, other is page number, K. sir. Page number. Okay, page number G is in 52, K is in 53. This is additional lines which has been made for reference. Actually, if you will go to the respective, as it has been said, if you will go to their respective standards, then it will be more clear to the users. Okay, but only some lines has been added so that it can explain a little bit which kind of cement it is. So for going into detail, one will have to go to the specific standards of that particular cement, and perhaps all these lines has been taken from there. Okay, prevailing temperature in case of super sulfated cement is, it has a harmful effect in terms of stability over and above 40 degrees centigrade, and that's why also it is not being used for steam cured concrete. So, And to some extent, because uh, super sulfated cement is when slag is more than even 70%. Okay, so from that kind of perspective, it is harmful to be used when the ambient temperature is over and above 40 degrees centigrade. It may be that prevailing temperature, specifically, it will have to be designed for 1 or 2 months regularly. It should not be 40 degree or like that. But even if for 3 months in a year, if the 40 degree over and above 40 degree condition is prevailing, just like in case of Delhi or Rajasthan, then it should not be used in general purpose usage. And most of the as you time, mentioned, sir. sulfate resistant cement or super sulfated cement is used where the sulfate resistant property is needed, and there is a tendency of sulfate attack, and sulfate attack happens when the part of the structure comes into the touch of, or comes into the vicinity of groundwater or soil, because the sulfate comes from the groundwater and soil, and that attacks on the concrete. So most of the time, the foundation or in the uh, groundwater, touch with the groundwater or foundation or soil. So in that type of structural member, only super sulfated cement or sulfate resistant cement is prescribed for. Okay.
And sir, one suggestion we can put in that the detail, the reference codes can be mentioned there, because prevailing even for 3 months, somebody can Reference code has say been that I mentioned. am in Reference, winter. sir, reference code has been mentioned. You will see the list. If you will see the list which has been read already in 7.1.1.2 A and 1.1.2 B. So the relevant standard has been mentioned everywhere. White cement Correct, correct. conforming to That's IS 8042, super sulfated cement It is, conforming to it is, sir, it is. 6909. So every number, IS number has been mentioned here. It has been mentioned, sir. Can you see so that? okay. Yeah, that is there in the initial reference, because when we are specifically mentioning certain things like prevailing temperature, now the definition of prevailing temperature will be We different for will, different people. Three Rupesh ji months will, somebody can say I am in winter and it's less than 40 degree. Somebody say no, during the year it should not come. So those No, no, details, you are if it right. is That coming, that should be a is specific. That should be we a will, we specific. will You are right. include this in CEA's recommendation, Rupesh You ji. can make a right. comment. If you can make a comment, it should be a specific. I agree with that. We will mention it there, sir. Coming on to, if no other questions, we'll proceed toward water. And one of the suggestion which is from my side is Ojaji. So we have read water. नरेंद्र गोयल जी भी कुछ कहना चाहते, but water के case में sir, CA will again mention one of the requirement. अगर आप पोर्टेबल वाटर और नेचुरल सरफेस वाटर पढ़ें तो एवरीवेयर स्पेसिफिकेशन मेंशन करा हुआ है दैट द वाटर शुड कंफर्म टू 7.1.1.3 B. However, the same line is missing from treated water. So CA नहीं अभी kindly मतलब clarify, or सीमेंट otherwise. खत्म हो गया क्या? हाँ जी सर. ओके, तो वाटर सर सीमेंट वाटर में आपको कुछ ऐड करना है अपनी तरफ से तो प्लीज आप कुछ एनलाइटन कर सकते हैं. नहीं नहीं Final- मतलब आप लोग पूछिए तो मैं कुछ उस पर कमेंट करूंगा. अदरवाइज मैं इसको अभी फिलहाल इसको मतलब डिस्कस्ड मानता हूं. इट हैज बीन डिस्कस्ड. जी राइट राइट. The water, the mixing water or curing water said be clean. This is the generic statement in the first opening statement. And Yes, the sir. types of water, it has been mentioned: potable water, natural surface water, and all this. And 7.1.1.3b, one. सर एक्चुअली में पोर्टेबल वाटर और नेचुरल सरफेस वाटर में क्लियरली मेंशन करा हुआ है दैट द वाटर शुड कंफर्म टू द क्लॉज 7.1.1.3 B, but the same is not, the same is missing from treated water. So I think sir this should be mentioned in water recovered from processes in concrete industry as well as for treated water. This is one of my suggestion. If this missing actually, because No, no, then no, 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 it is not like that. This B is saying about the testing and requirements of water. yes sir, Okay, in the page number 54, the 7.1.1.3b, 3b yes sir, is testing about the one is preliminary testing and inspection. Okay, and second is permissible limit for solids shall be given in table 7. So yes, so so it is saying that your water should meet the requirement as per table 6 and table 7. So indirectly indirectly that is the meaning. So if you will see the table 6 and table 7, that table 6 is for preliminary inspection and table 7 is for permissible limits. So these should be met. Okay. And so in point number 1, preliminary testing and inspection. Second, the permissible limit. Third is pH, and fourth is about alkalinity and acidity. And fifth is the solid materials. Sixth,
So the sixth point is there, six number of points, so that should be met. Numbering can be editorial mistake, can be, which you can point it out, but this is the meaning. Okay, sir. Thank you, sir. Narendra Goyalji, you started, when we started, you were saying something about water. Please enlighten us. सर अनम्यूट करिए प्लीज अपने को, गोयल साहब. नरेंद्र गोयल जी किस इंडस्ट्री से हैं, क्या सर थोड़ा बोलिए. सा परिचय दीजिए. Sir, I am from ATCO laboratory. अच्छा, ये लैब आपको, अच्छा, हाँ हाँ आओ, सॉरी, हाँ गोयल जी बताइए. he's been a सॉरी lab person, lab हाँ, नहीं, expertise. सॉरी, आई एम सॉरी. गोयल साहब I प्लीज. have met so many Sir, times. sir, I want to draw your attention regarding the table permissible limit of the water in table 7. हाँ. The limit of sulfate should be same for curing and mixing water. Limit are different given for both for curing water and mixing water. Why it should be same? It should be same. Why it should be same? Because the curing, wherever the curing is done, the sulfur can affect. नहीं, can attack, but that's why अगर अटैक नहीं करता तो कोई लिमिट नहीं होता. लिमिट है. But so why different for both these two? Mixing water, when mixing water, the sulfate present in it directly will stay in the concrete, and curing water for a certain period. अरे सुन तो लीजिए पूरा. गोयल साहब एक मिनट. Or curing water will be for certain period. In that period only, because of the curing, sulfate will not enter inside the concrete whole mass. So that's why, because there is a scarcity of water all over India, particularly, so the limit has been relaxed for this, for curing water. Okay, so it is not like it is by mistake it has happened. Intentionally it has been relaxed. It should not be same. Okay, got it. सर ये पॉइंट नंबर 4 जो है एल्कलिटी एंड एसिडिटी वाला, हाँ, इसका कोई हमारे पास इसका वो है कि क्यों ये वैल्यू, ये कैसे आई, ये वैल्यू ठीक है? नहीं, ये तो सर टाइट्रेशन से है ना. नहीं, वो टाइट्रेशन से है, पर ये वैल्यू ही हमारे कंक्रीट के लिए ठीक है, इससे ज्यादा होगी तो नुकसान करेगी, ये कहीं कुछ एस्टेब्लिश हुआ पहले? नहीं, वो तो सर डाटा जनरेट करके देखा हुआ है लोगों ने पास्ट में. ये तो कई सालों से चला आ रहा है. ये तो कई सालों से यही वैल्यू चली आ रही है, पर मेरे को लगता है एल्कलिटी की वैल्यू जो है, एल्कलिटी स्लाइटली हायर होने से कोई नुकसान नहीं है. नहीं, अल्कलिनिटी शुरू में स्लाइटली हायर होने से इंटरफेरेंस विद द हाइड्रेशन हो सकता है. हाइड्रेशन. और दूसरा एक चीज ऑब्जर्व किया है कि एल्कलिटी की वैल्यू और पीएच आपस में कोई कहीं कोरिलेट नहीं होती है. एक बार इसको थोड़ा सा अगर किसी लैब में देखा जाए तो. देखिए बछानी साहब, क्या है कि किसी गट फीलिंग पे या कुछ भी कमिटी में डिस्कस नहीं हो पाता है. कोई डाटा जनरेट करके, सुनिए तो, कोई डाटा जनरेट करके देगा कि मैंने ये किया है, डाटा जनरेट किया है, और ये वैल्यू रिवीजन के लिए डाटा के बेसिस पे, अगर कोई जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको डाटा के बेसिस पे हम रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. बट डाटा शुड बी अवेलेबल, एंड वन शुड प्रूव इट दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग दैट हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड. ऑन द बेसिस ऑफ दैट द रिवीजन कैन बी रिक्वेस्टेड. बट ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि हायर एल्कलिटी इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इनटू पीएच वैल्यूज. पीएच वैल्यू वही रहती है, एल्कलिटी हाई दिखा रही है. तो क्या दोनों में कुछ ठीक है? इसका डेटा जनरेट करना पड़ेगा तभी आपसे बात कर सकते हैं. नहीं, पीएच वैल्यू वही नहीं है सर. ये पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए. अगर पीएच वैल्यू 8 भी है, पीएच वैल्यू 8 भी है, तभी तो यूज हो ही सकता है ना. But it should have upper limit also. pH should have upper limit also, sir. Not less than 6, not more than 12 or 10. सर अल्कलिनिटी से वो गवर्न हो जाता है. माने एसिडिक नहीं होना चाहिए वाटर, वो ज्यादा हार्मफुल है. लेकिन सर अपर लिमिट होनी चाहिए pH के. हायर होता है
तो वहां पर मैंने देखा था एक जगह पे आरओ प्लांट लगवाया, जबकि स्लाइटली हायर था, पर आरओ प्लांट की जरूरत नहीं थी। सर तो आरओ वहाँ आरओ प्लांट, प्लांट सर आरओ नहीं नहीं प्लांट नहीं सर, if water is failing in alkalinity, so people are using somewhere acid dosing also. वो तो गलत है। अब देखिए, लोगों के इंटेंशन को स्टैंडर्ड्स केयर नहीं कर सकता जी है। जी जी। नहीं रहेगा, गलत इंटेंशन से कुछ काम किया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, स्टैंडर्ड इलाज ऐसे नहीं कर डोजिंग तो बहुत बहुत रिस्की है। नहीं बट सर वेलकमिंग है जो आईएस इसमें आपने रिक्लेम्ड वाटर को भी परमिट किया है, ट्रीटेड वाटर को परमिट किया है। पहले जो कोड था वो अनक्लियर था ये सब चीजों में, मतलब एंटायर इंडस्ट्री इज यूजिंग ट्रीटेड वाटर मोस्टली, बट अभी जो वाटर कंजर्वेशन में बहुत हेल्पफुल होगा ये सब, जो थोड़े बहुत निटी ग्रिटी है, कुछ लिमिट्स का इधर उधर होगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लाइव हैं सर, तो मैं सारे जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा, इफ समवन हैज डेटा रिलेटेड टू एनीथिंग जो आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये लिमिट्स, अगर मेरे पास डेटा है तो दे कैन सबमिट टू बीआईएस डायरेक्टली, और सीईए को भी दे सकते हैं, हम भी आगे प्रपोज कर देंगे इफ इट इज वैलिडेटेड। ठीक है, हम लोग डेटा देख रहे हैं इसके लिए। जी सर, विनीत जी कंटिन्यू। एनीथिंग एल्स? सर के टेबल 7 का, Anything else? सर क्या क्या बोल एक रहे टेबल हैं 7 का जो नोट नरेंद्र है, जी? नरेंद्र जी क्या हैं? बोल रहे हैं? सर एक तो मेरा पीएच का जो ना लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट भी होनी चाहिए सर, अपर लिमिट भी पीएच की। अपर लिमिट कहाँ देखा है आपने, किस स्टैंडर्ड में गोयल साहब? नहीं सर, होना चाहिए सर, इसमें भी मेरे साथ मैं नहीं एडवाइस है मेरा आपकी, कि इट शुड अरे बी नो भाई मोर देन आपका 10। कोई, अरे गोयल साहब, या तो अब जस्ट हमने बात किया, या तो कहीं डाटा हो, या कहीं अदर अदर नेशनल स्टैंडर्ड में हो, ईएन स्टैंडर्ड में, आईएसओ में, एएसटीएम में, कहीं वहां पर हो, तो उसको आप क्लेम कर, उसको आप रेफर कर सकते हैं। या आपका ये अपना डाटा हो कि अब लोअर लिमिट है तो आप फॉर द सेक ऑफ इट आप बोलेंगे कि अपर लिमिट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता ना। नहीं, और अपर लिमिट के बाद लिए में डेटा देना पड़ेगा जी। और बाद में क्या वो है कि alkaline बाद में आप कंक्रीट का जानते हैं, कंक्रीट का अपना पीएच 12.5 12 13 तक चला 12 जाता 12 है। के आसपास चला जाता है। सो अगर मान लीजिए कि व्हाई इट शुड बी देयर द अपर लिमिट व्हेन द कंक्रीट पीएच इटसेल्फ इज गोइंग अप टू 13 13.5, व्हाई इट शुड बी? आप बताइए गोयल साहब। ठीक है सर, आपके पॉइंट ठीक है, लेकिन इट्स बट सर क्योंकि लिखा ना कि मतलब हार्ड कोई डेटा I हो जाएगा think सर, जैसे एल्कलिन एएसआर वैल्यू एग्रीगेट का हायर है तो कुछ वैल्यू ऐसा देना चाहिए, बट इट इज लेट्स ऑलरेडी sir, all depends on the data. BIS will only consider data with the with experimental proof. So we again request the audience, if somebody have done this R&D, ki alkalinity of pH of the water have some effect, in any kind of effect on the performance of the concrete, please share with the CEA, or can be mentioned there, so that it can be thought upon, because any comments uh, will be welcomed by BIS only if some validity proof is given. So if audience is okay, if our panelists is okay, then uh, any other question regarding testing or sampling or requirement of water or specifications of water, otherwise with the permission we'll start the next, we'll come to the, yes please Rupesh ji, unmute yourself please. Just one quick question that is related with the again sulfate limit for curing water. So when we are Yes, using 800 mg per liter, I think for the sulfate as SO3, will it lead to some whitish surface for the concrete after curing? Because the sulfate is more, it may not go inside the concrete, but it may remain on the surface. Oja sir, any effect on the aesthetics of the नहीं concrete? नहीं नहीं, ये उनका क्वेश्चन है। नहीं नहीं, it may है, but all the time sulfate may not have that much 800 mg per liter, may not have that kind of effect. If it is there, it should be lower. This is the limit. Below that you can use. Okay. But where there is no water is available, only the water is not complying with that kind of this,
तो और स्कार्सिटी है वाटर का, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज बीन अलाउड, बट ऐसा नहीं है कि यही वाटर यूज होना चाहिए. So, but sir, some people, once the curing is done and if there is any whitish colors coming, even as the sulfate minor layer also coming, they consider that the concrete is having some problem. People don't know about that, and then they say the all investigation is to be done. So if something like that is mentioned somewhere I don't as a think only by curing for 7 days or 14 days or whatever is permitted for that kind of environment, for that kind of structural element, the curing period, in that curing period only this kind of precipitation will happen on the surface because of only curing water. So Nowadays, many if it is persistent uh, uh, water accumulation there, and then it can happen, but only because of the curing, because curing is for a specific period in the initial days, not after that. So in addition permitting to this. that, sir, nowadays curing compounds are being relatively used more on our side. Curing with water has been limited because of again scarcity of water. So yeah, that may be one of the cases. But again, we request the audience, if somebody has some such kind of data, should be So, shared BIS. so curing is for a particular specific period in initial days, not throughout the year. So when this phenomena is not throughout the year, then I don't think, I have not any evidence. I have not uh, done it on my own with uh, 800 mg and then curing it for 14 days and looking at the surface aesthetic. I have not done it, but in my views No, that it will not be. If anything is coming in future, this is not that like BIS has made this line and it is not agreed to amend in future. Even if the amendment happens in the due course of time throughout the application of the standard, but whatever the amendment comes, all those are also dealt with based on merits. on a lighter note, Rupesh ji just have given our audience some young budding engineer to do some R&D work. Somebody may okay. pick up this and see if something happens, Yeah. and that may become part of their MTech dissertation or PhD work. So thank you, Rupesh ji, for that. Somebody may Just pick one this comment up I will and give. do some R&D over it. One generic comment I will give. See, there are many places where the English is not clearly articulated. It's not does not No, no, give the clear picture. no, And Rupesh ji, the it may worst part happen. is No, no, actually, this is so voluminous and so many people are involved. Someone is yes, being discussed in the committee, and those content is being written by sometimes BIS officer, sometimes. So it may happen. It is not, I am not denying it. So it may happen, and it will be at so many places, and that's why it is for wide circulation. The comments are invited, the committee is agreed to discuss on those comments, rectification, modification. We are only discussing it. If the valuable, just in super sulfated cement you said that that is not clear, I immediately agree that yes, that point is not very much specific and very much clear. So this type of things will be found throughout the can be found throughout the this big volume. We will yeah, we that's will why I've given. give those suggestions. CA Yeah. Yes. will forward those suggestions. Shall I move forward to the admixture Mhm. 7.1.1.4? If no query from regarding water, shall we close the water criteria for water is then I'll say clear to the audience and the panelists. Yes, sir. We should move ahead. Yeah, please. Yes, sir. Coming on to it, please, uh, those who have gone through the admixtures, the panelists, please put forward your query, and I'll be happy if Ojaji please clarify their doubts and all. If there is no query regarding admixture, please enlighten our audience No, with. I have one. I have one. Please, put forward your query, sir. Sir, in fly ash,
7.1.4 A fly ash. It is written that fly should conform to IS 3812 part 1. And in the last line, the fly ash should have minimum fineness of 280 meters square per kg. But in IS 3812, it is given 320 minimum. Yes, this is allowing up to 280. Yes, but it is in code it is given 320 minimum. Yes. In my views, we have written to the BIS to revise IS 3812 also, to allow the price up to 280 meter square per kg. Why? Because if you will see, I have taken sample of fly ash from 10, 12 thermal power plants, and except one or two, no thermal power plants were fly ash were complying this requirement of 320. So what is happening at RMC plant? Even if they are getting 280, they are beautifully maintaining in their register or their test report that it is meeting the 320 requirement, and they are using the fly ash. Why to allow this type of thing? Why to allow this type of thing? Let us revise the standard itself and allow up to As per the 280. availability, as per the availability. And second We is should add. that ये प्लीज एक एक करके पूछे। ओजे जी आप कंटिन्यू करिए, किसी का माइक ऑन होगा। So after all these revisions, because BIS has so many work, so we have from NCCBM we have already given that this IS 3812 part 1 shall also be revised, and if it will be revised, this recommendation of 280 will come in that also. थैंक यू। तो मुझे साहब एक चीज और था, ये जो M40 ग्रेड के लिए आपने फ्लाई एश को ज्यादा परमिट करने का लिखा है, अलाउ कर दिए, परसेंटेज ज्यादा अलाउ की, वो मैं सोच रहा था कि अगर आप ऐसा ना हो कि मास कंक्रीट के लिए ज्यादा अलाउ करें, हाई राइज के लिए कम करें। ये रादर उल्टा होना चाहिए कि M40, 50, 60 में ज्यादा अलाउ करें, उसकी जगह में मास कंक्रीट में ज्यादा अलाउ करें। वहाँ हीट ऑफ हाइड्रेशन का ज्यादा इशू होता है, वहाँ अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए हाई राइज स्ट्रक्चर में। Strength, this is not from a strength point of view. A strength you will design, and if we are getting a strength is okay. This is from durability point of view. When your concrete is made at water cementatious ratio, water C, we will change it. Water binder ratio, we will have to do that. Okay. You can make it a comment that it is not water cement ratio, it should be water binder ratio. That comment you can make. Okay. Yeah, Binit ji, you can make this comment. Okay. But when you are making the water binder ratio less than 0.4, then that type of concrete cover will have a high resistance against carbonation. And why fly ash is being restricted, even if the strength we are achieving in the mixed design by using some admixture and some silica fume together, all those things, because of the carbonation issue, because the concrete cover concrete should not carbonated, and the carbonation front should not reach to the reinforcement level. From that point of view, where we are restricting the use of fly ash more than the prescribed limit. Okay. But if the concrete will be made the at water cement ratio less than 0.4, then that concrete will be little bit impermeable, and the carbonation front progress will be lower, and it will have a high resistance against carbonation. From that point of view, it has been argued, and the data has been given by Professor Bisnoi from IIT Delhi, and on his basis of his data, this at water cement ratio less than 0.4, based on the design, it has been allowed. And what is the maximum limit? Fly ash more than 35, but how much more?
it 40, it has 45, not been 50. to the end we are getting the strength and other mechanical properties. So it can be used up to 60%, 70% also. If you can use and There you has are to be getting, some upper limit. There has to be some upper limit for that. you can make it a comment. We will try to do that. Because we can't leave it open, because then how industry will So take it. your in my views, your comment is appropriate. We have discussed in the committee. I have also explained that the thought process behind it. Okay, thought process behind it, how it has come, and if you will make a comment again, we will be discussing it. ठीक है, okay. सर मेरा एक कंसर्न था कि नॉर्दर्न इंडिया में पर्टिकुलरली फ्लाई ऐश का स्केर्सिटी है, और अगर हम जीजीबीएस लेते हैं तो उसकी कॉस्ट सीमेंट से भी ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ के लिए इस हम नए कॉस्ट कोड में कुछ वगैरह अभी ऐसा नहीं नया डिस्कस कर, प्रोडक्ट नहीं, ठीक है, कॉस्ट नहीं डिस्कस कर रहे, पर क्या नया कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे कैल्साइंड के लिए वगैरह इस तरह का कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है इसमें? नहीं, आपका कुछ बैकग्राउंड में कोई आ रहा है आवाज, जिससे आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है. Someone has opened from two places or like that. नहीं Noise are सुदर्शन जी coming. बैक बोल दीजिए Now, फिर एक बार now, क्लैरिटी now noise is not there. Okay. क्वेश्चन नाउ बिकॉज़ ये उन्होंने म्यूट कर लिया है सर, इसलिए नहीं, I'll repeat his question. He is telling के other than fly ash, because यहाँ पे थोड़ा scarcity है fly ash का, good quality fly ash. So are we proposing any other materials like अदर रिप्लेसमेंट कैल्साइन क्ले वो बोल रहे हैं, वैसा हम नहीं, कुछ कैल्साइन के लिए तो नहीं, बट ये तो लिस्ट है ना. हाँ जी। फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम, मेटाकाइलिन, जीजीबीएस, अल्ट्रा फाइन जीजीबीएस, अल्ट्रा फाइन फ्लाई एश, ऑल दीज आर इन अलाउड. ये सारा अलाउड है. जी सर, कैल्साइन के लिए नहीं अलाउड है. जी सर एक इशू और आया था पीछे कि हाँ, हाँ. एनटीपीसी कुछ एनवायरमेंट नॉर्म्स की वजह से कुछ केमिकल कुछ ऐड कर रहा है वहाँ कोल बर्निंग के टाइम, उसका इफेक्ट फ्लाई ऐश की प्रॉपर्टीज पे बहुत खराब हो रहा है. कभी तो बहुत अर्ली सेटिंग हो रही है, कभी तो बहुत फास्ट सेटिंग हो रही है. तो एनटीपीसी में जब जाके पूछा, बोला हमारा प्राइम प्रोडक्शन है, हमारा काम है पावर जनरेट करना, फ्लाई ऐश की हमारी क्वालिटी के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे. नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही उसमें है. वो क्या उसको बोलते हैं, वो सॉक्स और नॉक्स के कैप्चर करने के लिए हाँ उसको वो नाम मैं भूल रहा हूं उसका, वो प्रोसेस कर रहे हैं. उसकी वजह से देयर इज प्रॉब्लम, बट राइट नाउ वो थोड़ा सा किसी वजह से अगेन रुक गया है. ओके वो अच्छा किसी वजह से अगेन वो रुक गया है. सो नाउ दैट केस इज नॉट देयर. उससे कुछ इन्वायरमेंट को कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए वो प्रोसेस रुक गया है. एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ. तो वो अभी इशू नहीं है. ठीक है, अगर वो सॉल्व हो गया तो बहुत. हाँ, हाँ, वो शुरू हुआ था, बट बिकॉज ऑफ नॉट मच बेनिफिट आउट ऑफ दैट, तो वो इन्वायरमेंटल बेनिफिट, तो वो कुछ वो चीजें रुक गई है. वो क्या उसको बोलते थे, एफजीडी नहीं, कुछ ऐसे. हाँ कुछ ऐसा ही कुछ नाम था उसका. हाँ, ऐसे कुछ नाम. तो फ्लू गैस कुछ है, हाँ, फ्लू गैस से सल्फर को ट्रैप करने के लिए था. या सल्फर को ट्रैप करने के लिए दो केमिकल परमिटेड थे. तो एक हाँ, वही. केमिकल डालते थे तो हाँ, एक केमिकल से उसकी ठीक आती वजह थी से प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल से वो खराब उसकी होती वजह से होता था. सो वो इट वाज थी. फॉर सॉक्स, वो ट्रैप करने के लिए था. तो वो उसमें अगर चेंज आ रहा वो था. प्रॉब्लम ठीक है हाँ, फिर तो ठीक, सो दैट क्योंकि ये दैट आरएमसी ने फेस किया था प्रॉब्लम ये. yes, that issue has been stopped. तो आगे बढ़े. ये बढ़ते हुए प्लीज कमेंट्स रिगार्डिंग एडमिक्सचर. तो ये एक आपका ये पॉइंट नंबर 2 में ये कॉम्बिनेशन वगैरह का है. किस फ्लाई ऐश यूज कर रहे हैं, तो मतलब कभी कभी हायर ग्रेड के लिए आपको सिलिका फ्यूम इस्तेमाल करना पड़ता है, या अल्ट्रा फाइन फ्लाई ऐश, या अल्ट्रा फाइन जीजीबीएस.
तो वो कंबाइन टुगेदर कितना मैक्सिमम यूज हो सकता है और कितना, वो टेबल दिया हुआ है। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्ट्रा फाइन मटेरियल्स विथ फ्लाई एश एंड जीजीबीएस, तो वो कितना मैक्सिमम यूज हो सकता है, वो सब चीजें दी हुई है। ठीक है, वो सब चीजें भी लिमिट वगैरह लगाई हुई हैं कि बेलगाम चीजें न बढ़े। सर और इसी पे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, It says, however, whenever felt necessary, like for mass concrete, structure below ground, not exposed to atmosphere, किसमें higher पॉइंट नंबर, grades, पॉइंट नंबर 7.1.1.42. अच्छा, इन Admixture जनरल volume. मोर देन वन टाइप ऑफ मिनरल मिक्सचर विल नॉट, यही ना? या हाँ हाँ, इसमें सो इन जो जनरल नेक्स्ट मोर लाइन देन, में लिखा है, हाँ एक मिनट पढ़ ही लेते हैं। तो in हाँ, general, more than one type of mineral admixture will not be used in same batch of concrete at site. So generally, because of complexities and all that, so more ठीक है, than one type of mineral admixture addition at site is not allowed, although it is allowed in composite cement. Okay, composite cement में तो वो factory से ही आ रहा है, but generally at site it is being discouraged. However, whenever felt necessary, like for mass concrete structure below ground, not exposed to atmosphere, higher grades of concrete, and for plain concrete, not for RCC work, at ऊपर में, या तो ग्राउंड के नीचे है, या हायर ग्रेड कंक्रीट है, या प्लेन कंक्रीट है, the use of more than one type of mineral admixture, that is fly ash and silica fume, with ordinary Portland cement can be permitted subject to limits mentioned below. However, silica fume may be used as an additional mineral admixture in reinforced concrete subjected to limit specified above. Uniform blending of the mineral admixture with the cement should be ensured. In such cases, fly ash and GGBS together may be used with the following limits: fly ash 20% and GGBS 25%. एक्चुअली ये डिस्कस कुछ और हुआ था और आ गया है कुछ और। ये सिलिका फ्यूम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये जीजीबीएस होना चाहिए सिलिका फ्यूम के हिसाब से। दिस इज एन एडिटोरियल, नहीं, दिस इज एन एडिटोरियल। मैं बोल रहा था ना, ये जब कमेटी में डिस्कस हुआ तो हम लोगों ने बोला कि ये होना चाहिए, तो वो बीआईएस के ऑफिसर ने नोट किया और वो मतलब कंफ्यूज हो गया, वो सिलिका, ये जीजीबीएस को लिखने की जगह सिलिका फ्यूम लिख गए। तो दिस शुड बी मेड करेक्टेड। मैं भी नोट कर लेता हूं, एक मिनट। Sir, we have some questions in our LinkedIn page also. तो मैं टेकअप कर देता हूं जब तक सर आते हैं, तो प्रोबेबली हमारे एक्सपर्ट्स कुछ उस पे बता पाएंगे। वछानी सर, पर्टिकुलरली आपका है, इफ वाटर इज pH 10 pH, वाटर pH इज 10, तो क्या होगा, पूछना चाह रहे हूँ। वाटर 10 pH वाला कभी ट्रायल तो करके नहीं देखा है, पर वो आईएस कोड का जो टेस्ट है उसमें तो एल्कलिटी में तो फेल हो ही जाएगा। 10 pH वाला एक सर राहुल गोयल सर का कमेंट है, इज कॉम्पोजिट सीमेंट इज एडेड इन द न्यू कोड? सर हाँ जी, कॉम्पोजिट सीमेंट ऐड किया विद मिनिमम क्लिंकर परसेंटेज 45%, वो लिख रहे हैं। एंड सिद्धार्थ भट्ट जी का कमेंट है, UHP FRC आर एडेड बाय मॉर्थ एंड DSRO बट देयर इज नो प्रोविजन इन 456। सर ये हमारा जो UHPC है, जैसे पहले दिया, वो एक्चुअली उसके लिए अलग कोड बन रहा है, जो बताया सर ने। ये M100 तक का है ना, तो वो तो M100 से ऊपर हो जाता है जी। नहीं, M100 नहीं, M80 अलाउड है इस स्टैंडर्ड में। अलाउड है जी। तो अच्छा, सर हमारा M80 कमेंट था कि UHPC इस कोड में है, तो UHPC के लिए तो डिफरेंट कोड आएगा आई बिलीव, क्योंकि दिस कोड डज नॉट। UHPC इस कोड में नहीं है, बट UHPC के लिए एक डिफरेंट कमिटी है। वी आर ड्राफ्टिंग 2 स्टैंडर्ड्स फॉर UHPC, वन इज फॉर टेस्टिंग एंड वन इज फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन।
okay, how to design the mixage for UHPC. Okay, तो वो मतलब UHPC is a new development, उसका डिजाइन स्टैंडर्ड, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, ETC, हाँ, वो बिहेवियर, उसका कंक्रीट का बिहेवियर, स्ट्रेन, स्ट्रेस, डक्टिलिटी, all those things will have to be documented and all those. So the person, the specialist people who are doing the design, they are doing, but for general purposes there should be a standard, and standard अभी defined नहीं है. All the data are not available, okay, UHPC के लिए. तो इस कमिटी ने UHPC को इसमें इंक्लूड करना उचित नहीं समझा. तो UHPC के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड होगा, या अगर इसमें इंक्लूड करना होगा फ्यूचर में, तो रिसर्च विल कम बेस्ड ऑन द डाटा, इट कैन इंक्लूड इन द फ्यूचर, और इफ इट इज अभी रिक्वायर्ड. IRC में है सर. IRC में सर वो ये एक ये जारी किया है सर्कुलर, उसके अंदर में इस्तेमाल हो रहा है. कोई डिजाइन का क्राइटेरिया और डाटा और ऑल दोज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल. They are still following, sir, foreign codes. हाँ, वो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है. सर्कुलर है यूज करने का, कि आप यूज करिए. सर्कुलर है सर, और एक उन्होंने शायद गाइडलाइन भी बनाई है UHPC को लेके. हाँ रुपेश जी, ये मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में मिस्टेक है. ये जब डिस्कस हो रहा था कि फ्लाई एश के साथ में सिलिका फ्यूम आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और GGBS कितना तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लाई एश के साथ में, तो ये चीज था. बट ये ड्राफ्टिंग में थोड़ी मिस्टेक है. इट विल हैव टू बी सीन. मैंने नोट कर लिया. इसमें सर एक रिक्वेस्ट और था मेरा, इसमें वर्ड लाइक एडमिक्सचर, इसमें जो वर्डिंग्स है ना, आई विल जस्ट रीड वन लाइन. वन टाइप ऑफ मिनरल एडमिक्सचर दैट इज. सो वन टाइप ऑफ मिनरल एडमिक्सचर, वी कैन से दैट ओके इट इज वन टाइप, एंड दैट इज वर्ड नहीं होना चाहिए, लाइक वर्ड होना चाहिए, लाइक फ्लाई एश और सिलिका फ्यूम, फ्लाई एश GGBS, फ्लाई एश मेटाक्यूल, इस तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते. तो दैट इज वर्ड के मतलब में लाइक या सिमिलर टू, ऐसा कुछ होना चाहिए. नहीं, आप इसको रीड्राफ्ट करके अगर क्लॉज दे देंगे तो कमिटी को आसान होगा. आप उसमें दोनों है, आप इसके फॉर्मेट में देखिएगा, जो कमेंट का फॉर्मेट है उसमें क्लॉज नंबर एज इट इज एंड सजेस्टेड क्लॉज दोनों है. तो आप इसको टाइप कर दीजिएगा, माने इसको उठा लीजिएगा, और फिर इसके जगह सजेस्टेड टू मेक इट मोर क्लियर आप वो दे दीजिएगा. फिर वो कमिटी पढ़ेगी, एंड इफ योर ड्राफ्ट विल बी मोर क्लियर, मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट एंड मोर एक्सप्लेनेटरी, तो उसको अडॉप्ट कर लेंगे. और एक चीज और था इसी में रिलेटेड सर, जो अपना हम लोग ये डाल रहे हैं, इसमें हम लोग वर्डिंग्स हमने डाला है कई जगह पे, रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट. And when we say replacement of cement, then there is one restriction, possible restriction which may come, because say if we look at cement, then in general, say if I am replacing OPC, because you don't replace PPC, you replace OPC. OPC has a limit of in general 450 kg per cubic meter. That means the replacement shall be within that 450 kg only. When I use the word replacement or addition, नहीं, रिप्लेसमेंट मतलब आपको 450 के अंदर में ही नहीं है. अगर उस रिप्लेसमेंट से 450 एक्सीड कर रहे हैं, तो वो 450 एक्सीड कर सकते हैं मिनरल एडमिक्सचर के थ्रू. नहीं, इन एडिशन टू द 1062 और पुराने 456 में से लिखा हुआ है कि इफ म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल देन यू कैन गो बियॉन्ड 450 kg आल्सो. ये भी दिया हुआ है कोड में. 1062 में भी था. तो वो 450 वाला लिमिट जो है ना सर, दैट इज नॉट ओनली टू सीमेंट ओनली. मतलब अब वो ये है कि भाई प्रेफरेबल आप 450 तक रहो, बट अगर इफ यू हैव टू गो लाइक 16700 में भी दे रखा है कि इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड 450 देन प्रिवेंशन हैज टू बी टेकन एंड म्यूचुअली यू कैन गो बियॉन्ड 450. ऐसा नहीं है. तो वो दैट इज देयर, जो मिनिमम सीमेंट मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट की बात. अगर वर्डिंग्स, मेरे हिसाब से वर्डिंग्स ऐसा हो एज ए रिप्लेसमेंट और एडिशन,
तो उन केस में cementitious material wordings is already there, so you are taking 35% of the cementitious कहाँ पर 30% as the limit. कहाँ पर नहीं, इसमें ये पूरे सेक्शन में देखेंगे ना, इसमें रिप्लेसमेंट जहां जहां लिखा है सीमेंट रिप्लेसमेंट, तो सीमेंट रिप्लेसमेंट मतलब सीमेंट आप डिफाइन कर रहे हैं एंड ओनली इन दैट यू आर रिप्लेसिंग। जबकि इसके लिए माइक्रो सिलिका के लिए एक जगह लिखा है कि इट कैन बी इन एडिशन। सो माइक्रो सिलिका के लिए तो एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है इट कैन बी इन एडिशन, बट फ्लाई एश, जीजीबीएस, अल्ट्राफाइन फ्लाई एश, अल्ट्राफाइन जीजीबीएस, उसके लिए कहीं भी ऐसा कोई भी वर्ड रेफरेंस वर्ड नहीं है। नहीं, आप ये बात ठीक बोल रहे हैं, रिप्लेसमेंट वर्ड ही हटाना चाहिए। रिप्लेसमेंट और एडिशन ऐसा लिखने से चल जाएगा का? नहीं, रिप्लेसमेंट वर्ड ही ना हो, कैन बी यूज्ड एंड देयर विल बी अपर लिमिट ऑन ओपीसी। तो आप करेक्ट यूज केवल लिखेंगे तो आइदर इट कैन बी रिप्लेसमेंट और इट कैन बी एडिशन। एडिशन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रिप्लेसमेंट वर्ड थोड़ा सा ये है। सर मेरा एक सजेशन था, ये माइक्रोसिलिका में, सर माइक्रोसिलिमा का में जो सिलिका फ्यूम में 3 to 10% दिया हुआ है, इज जनरली यूज्ड, ऐसा वर्ड लिखा है वर्डिंग, तो उसको कुछ स्पेसिफिक कर सकते हैं हम, या उसके आगे लिख दें कि मोर देन दैट। उसके लिए तो बहुत डेटा होगा, बहुत मैन्युफैक्चरर्स जो बना रहे हैं दे आर गिविंग द डेटा। नहीं, इट इज यूजुअली यूज्ड इन, नहीं, इट इज यूजुअली यूज्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ दिस 3 to 10%। अगर उससे ज्यादा यूज करना है तो आप यूज करिए, बट एज ए इंजीनियर इंचार्ज यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जानबूझ के यूजुअली वर्ड लिखा हुआ है। नहीं, वो स्पेसिफिक में कई बार सर आर्बिट्रेशन हो जाता है साइट पे, पीपल आर नहीं, साइट पे क्या आर्बिट्रेशन होगा? नहीं, क्या आर्बिट्रेशन होगा? आप मिक्स डिजाइन में जो एक्सेप्ट करेंगे क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, पीएमसी, दिस दैट, और साइन किए रहेंगे तो क्या स्पेसिफिक आर्बिट्रेशन होगा? We can, Raman, आपको स्पेसिफिकली देखिए, क्या ये आर्बिट्रेशन कब होता है? जब आप उसको ब्लैंक, आप कोई साइन नहीं करता है और अलाउ कर दिया, वो चल गया, आप स्पेसिफिकली लिखेंगे वहां पर कंक्रीट मिक्स डिजाइन में कि ऑल दो, लेट सपोज आप 12% इस्तेमाल कर रहे हैं पर पर्टिकुलर, तो आप लिखेंगे कि ऑल दो इन स्टैंडर्ड यूजुअली 3 to 10% वी आर एडिंग मोर देन 2% बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एंड सबके साइन होंगे। Yes. We will make a suggestion, Dr. Raman, that तो वो आप जुडिस थॉट एक्शन है, वेल थॉट एक्शन है, तो सीटी और कुछ आर्बिट्रेशन कुछ नहीं करेगा। बट आपने 12% अलाउ कर दिया और कुछ नोटिंग नहीं की, तो कोई पकड़ेगा बाद में कि क्यों किया 12%। अब उस समय आप बोलेंगे कि ये था रीजन, वो था रीजन, कोई नहीं मानेगा, बोलेंगे कि अब मैंने पकड़ लिया तो आप बोल रहे हैं। बट अगर आप पहले नोट किए रहेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। जी जी सर। We will give a suggestion that it may be marked that with mutual consent of the contractor and both the parties, it can be, you can take that only sir। मैं वही आंसर एक्चुअली टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में ये सब चीजें नहीं लिखी जाती हैं कि म्यूचुअली एग्रीड कॉन्ट्रैक्टर एंड दिस एंड दैट और ऑल दैट। सो उसमें ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में तो टेक्निकल चीजें अलाउ की जाती है। Duly noted. All right sir, noted noted। सर आगे चलेंगे और केमिकल एडमिक्सचर्स पे। ये इसमें एक पॉइंट नंबर 4 है, श्रिंकेज कंपनसेटिंग एडमिक्सचर शैल नॉट बी यूज्ड इन स्ट्रक्चरल कंक्रीट। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है सर? सर श्रिंकेज कंपनसेटिंग एडमिक्सचर इज ए एक्सपेंसिव टाइप ऑफ एडमिक्सचर, और उस केस में श्रिंकेज कंपनसेटिंग क्या है कि जो श्रिंकेज हो रहा है उतना ही डोज ऐड करें जिससे वो कंपनसेट हो, समझ गए? लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज्यादा इस्तेमाल हो गया तो वो एक्सपेंशन के रूप में क्रैक आ जाएगा, वो एक्सपेंड करना चाहेगा, उसकी वजह से कहीं क्रैक आएगा अगर थोड़ा ज्यादा डोज हो गया। सो श्रिंकेज कंपनसेटिंग एजेंट इज यूज्ड वेयर, लेट सपोज आपने कोई ग्राउटिंग किया बोल्ट का मशीन फाउंडेशन में,
बोल्ट वगैरह की ग्राउटिंग किया तो वो ग्राउट में श्रिंकेज कंपेंसेटिंग एडमिक्सचर्स इस्तेमाल करते हैं। बट इफ यू विल कंक्रीट में भी हमने बहुत प्रोजेक्ट में यूज किया सर। किसमें सर? कंक्रीट में क्लाइंट ने बोल के हमको यूज करवाया, बोला इसको यूज करना पड़ेगा आपको। मोल्ड में कई सारे प्रोजेक्ट में किया है। यही हमारा नेस्ले सोनीपत में किया था आपने, जो अभी रिसेंटली मुझे याद है। सर नहीं, उसमें नहीं, अगर आप माने अनरिस्ट्रेन्ड ये है, अनरिस्ट्रेन्ड है, वहां पर अनरिस्ट्रेन्ड केस में आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। अगर थोड़ा सा डोज, अगर वो कंपनसेशन के लिए एडिक्वेट डोज है, बस दैट एडिक्वेट डोजेज कैलकुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट, वी कैनॉट कैलकुलेट। और रिस्ट्रेंट भी है, लेट सपोज दोनों साइड में, और वहां पे डाल दिया और सम पोर्शंस आर ओपन, लेट सपोज बीम कास्ट किया, दोनों तरफ कॉलम है और बीम कास्ट किया उससे, तो वो एक्सपेंशन होना चाहेगा। कॉलम फ्रॉम बोथ साइड विल नॉट अलाउ टू एक्सपेंड, तो क्या होगा? इन द मिडिल ऑफ दिस द क्रैक विल अपीयर, मिडिल में। अब दूसरा केस लीजिए, वो नहीं डाला है और श्रिंकेज हो रहा है, तो श्रिंकेज का क्रैक कहां पर होगा? एट द एंड। वो कंक्रीट कंपनसेट होना चाहेगा और कॉलम के पास में वो कंप्रेस माने कॉन्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करेगा, तो दैट क्रैक विल कम सपोर्ट। ओके, तो श्रिंकेज अगर होगा तो क्रैक्स डिफरेंट जगह पे आएंगे, और एक्सपेंशन होगा तो कंक्रीट डिफरेंट, ये क्रैक्स डिफरेंट जगह पे आएगा। बट इन बोथ द केस क्रैक्स कैन कम, सो दैट्स व्हाई श्रिंकेज कंपनसेटिंग नहीं अलाउ किया है, श्रिंकेज रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स अलाउ किया है। दोज आर अपोजिट इन नेचर। श्रिंकेज रिड्यूसिंग एडमिक्सचर श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, बट वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। श्रिंकेज कंपनसेटिंग एजेंट इज एक्सपेंशन टाइप ऑफ बिहेवियर। जैसे लेट सपोज, आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, एग्जैक्टली वो नहीं है। एल्युमिनियम पाउडर इस्तेमाल करते हैं एसी ब्लॉक के केस, वो ग्राउट में करते हैं नॉर्मली, नॉन से ग्राउट में। हाँ, वो ग्राउट में करते हैं। उससे क्या है, अब अगर आप क्यूब भर देंगे ना शुरू में, और थोड़ी देर के बाद में देखेंगे तो क्यूब के ऊपर कंक्रीट एक्सपेंड हो गया है। पर सर कंक्रीट में कभी एल्यूमिनियम पाउडर नहीं डालते। मैं एक एग्जांपल दिया सर, मैंने मतलब पहले ही मैंने बोला कि एग्जैक्टली नहीं सेम है। वो एक एक्सपेंसिव टाइप का एडमिक्सचर है, मैंने इसलिए इस्तेमाल उसका एग्जांपल दिया। सो सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेंशन विल हैपन। वो उसका वैल्यू कम रहेगा, उसका मतलब एक्सटेंट कम रहेगा, बट सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर विल हैपन in concrete when shrinkage compensating agent will be allowed. So from that reducing तो shrinkage reducing तो कहीं भी allowed नहीं है। shrinkage reducing allowed है सर? नहीं, shrinkage reducing allowed, shrinkage reducing allowed है। टेबल में देखिए 6 नंबर पे। हाँ, shrinkage reducing ठीक है, वो तो पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकोल ठीक है। हमने तो यूज किया था पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकोल था। And for the benefit of all, in IS 9103, IS 9103 is also under revision, and IS 9103 will now come. अभी ड्राफ्टिंग शुरू हुई है। I am the convener for that also. So that will come in 7 part. Okay. So in part 1 it will come mid range and high range water reducers, उस सुपर प्लास्टिसाइजर वगैरह सब होगा। एक वॉल्यूम में आएगा सेट रेगुलेटर, सेट रिटार्डर एंड दिस। एक में आएगा एक्सेलरेटर सेट एंड ऑल दैट। एक में आएगा श्रिंकेज रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। एक में आएगा परमिएबिलिटी रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। एक में आएगा कोरोजन इनहिबिटर। तो इस तरीके से 7 पार्ट्स में 9103 will come now. Specification, evaluation, and their evaluation of compatibility, because concrete is not now one type of chemical admixtures only
using, but more than one, sometimes two or sometimes three type of chemical admixtures are being used in concrete. Superplasticizer, corrosion inhibitor, superplasticizer, corrosion inhibitor, permeability reducer, superplasticizer, or accelerator. So the most of the cases now concrete is not a material of convenience. Material of convenience था when we were using 4-5 और मिक्स करके और डाल देते थे मिक्सर में. Now it is material of precision. So how precisely you are controlling the rheology, how precisely you are controlling their behavior, mechanical and durability property in the long term. So when we are going towards the material of precision, then we will have a separate standards to evaluate these type of chemical admixtures and their compatibility together. So we are coming in 7 parts. We will be coming in 7 parts now, chemical admixtures. So this table has been included in this IS 456, and its implication is coming in the revision of IS 9103. Right, sir? Sir, shrinkage से related one more point was coming, because see, if we look at plastic shrinkage, sometimes we provide some admixtures which is not embedded into the concrete, but normally you spray it on the surface to reduce your plastic shrinkage. While for autogeneous or drying shrinkage, yes, we require to control the shrinkage. Normally any autogeneous and drying shrinkage should be restricted to 2 to 4%. जो नॉन श्रिंक ग्राउट में भी यूज होता है 2 to 4% ऑफ द श्रिंकेज कंपनसेटिंग मटेरियल्स, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए नॉन श्रिंक ग्राउट मटेरियल्स. सो एटलीस्ट प्लास्टिक श्रिंकेज जो होता है व्हेन द कंक्रीट इज अबाउट टू ड्राई, उस समय जो श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए जो अप्लाई किया जाता है केमिकल्स, तो उसके रेफरेंस वहाँ होने चाहिए ताकि एटलीस्ट पीपल कैन यूज इट फॉर reduction of plastic shrinkage compensation, not for drying shrinkage and autogeneous shrinkage. No, whatever is being here shrinkage reducing admixtures, this is for drying shrinkage and autogenous shrinkage, not for plastic shrinkage. Okay. Correct. उसका कोई रेफरेंस नहीं है, ऐड होना चाहिए, वो अलाउ होना चाहिए. मतलब नहीं, प्लास्टिक श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए आई डोंट थिंक कोई एडमिक्सर्स इस्तेमाल हो रहा है. प्लास्टिक श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए it is not embedded inside the concrete, it is sprayed on the surface like a so that is not the concrete making constituents. Yeah, right. Concrete making constituents nahi hai. Here we are discussing concrete making constituents. Whatever you are applying over and above the concrete surface, that is not concrete making constituents. Okay. And from that point of view, आप क्यूरिंग कंपाउंड की भी बात कर सकते हैं, जो मेम्ब्रेन क्यूरिंग कंपाउंड, बट मेम्ब्रेन क्यूरिंग कंपाउंड इज नॉट द कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट्स. जो सेल्फ हीलिंग क्यूरिंग कंपाउंड्स जो लोग बोल रहे हैं कि सेल्फ क्यूरिंग कंपाउंड जो कंक्रीट के अंदर में डालेंगे, दैट विल बिकम द कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट. But this membrane curing is not the concrete constituents. That's why that chemical admixture has not been included here. Okay. Sir, इसमें again on construction chemical admixtures में there is one point which is 7.1.1.4b2 and then point number 2. नहीं, कौन सा 7 point? ये admixtures का ही B section. बी सेक्शन में तो SCM केमिकल एडमिक्सचर. केमिकल एडमिक्सचर में 1 नंबर 1 है, 2 है, 2 पॉइंट नंबर 2 उसका सब सेक्शन पॉइंट नंबर स्मॉल 2 का 2 B22. The relative density of liquid admixture shall be checked for each drum containing admixture. ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? Each drum and compared with the specified value before acceptance. नहीं, यही एक्चुअली नहीं, ज्यादा तो नहीं है. आप इसमें अगर ये रिलेटिव डेंसिटी डिफरेंस होगा तो इसका एक्टिव डोजेज कंटेंट डिफरेंस होगा. दिस इज द प्ले
admixture manufacturers are doing. How we will control the एक quality or not? एक बैच नॉर्मली 9 टन का आता है नॉर्मली। सो 9 हाँ, टन हाँ। में आपको 45 ड्रम्स होते हैं। सो एक ही लॉट का 45 टेस्टिंग्स किया जा रहा है, 45 ड्रम की टेस्टिंग। नहीं 45 ड्रम इसमें तो ये तो नहीं बोला इसने। ड्रम लिखा है ना सर, ईच For ड्रम। each drum, For each probably drum. part of quality assurance. ईच बैच होने से सही है, नो प्रॉब्लम। बैच इज फाइन, बैच इज एक्सेप्टेबल। एक्चुअली ड्रम भी माने एक ड्रम में कितने केजी कितना लीटर आता है? The drum can vary from 200 kg to 9 ton. 200 केजी। Let me clarify, sir. ड्रम, ये जो दो टर्म्स होती है एडमिक्सचर कंपनी जो यूज करती है, ड्रम वर्ड जो है सर वो 230 केजी का होता है या 250, और एक बड़े टैंक्स लगे होते हैं। तो टैंक्स की केस में यूनिफॉर्मिटी है कि बिकॉज सिंगल मटेरियल विल कम, वो गाड़ी में आता है उसको पंप करके चले जाते हैं। ड्रम्स अगर जैसे सर कह रहे हैं, राइटली सेड कि अगर 9 टन आएगा तो 9 टन में उसको आप डिवाइड कर लीजिए 250 के हिसाब से उतने ड्रम्स आते हैं। तो चेकिंग ईच ड्रम अगेन चलिए, तो डिपेंडिंग वो ऑन सम टीडीएस में हो कई जाता है। जगह पे ड्रम वर्ड इज एक्चुअली फॉर 200 रहता है, 230 कहीं लीटर और 250 केजी वाला जो होता है सर। और एडमिक्सचर टैंक्स होते हैं वो बड़े होते हैं, दैट कम्स इन आपका 5000 किलो वाला आता है, 10,000 लीटर, 5,000 लीटर या 10,000 लीटर वाला आते हैं। तो वो अगर जैसे सर ने राइटली बोला, अगर हमने 2 टन अगर 10 टन मंगाया तो 2 ड्रम आगे बढ़े, तो उसमें चेक करना है। इस केस में सर नंबर बिकम्स मोर। मतलब बैच इज फाइन, बैच इज बिकॉज वन बैच इज फिल्ड इनटू, से अगर इफ आई कंसीडर वेरी हायर साइड 250 तो नॉर्मली नहीं एक्चुअली डालते, केमिकल 220 एडमिक्सचर के केस में बहुत वेरिएबिलिटी आता है। 5 ड्रम आपके पास में आएगा ना, पांचों ड्रम में डिफरेंट हो सकता है सेम एडमिक्सचर। नॉर्मली सर ये बैच वो लोग 9 टन का बनाते हैं। अब 9 टन में इवन इफ आई कंसीडर फ्रॉम 4, एक टन में 4 होगा, 250 केजी भी एज्यूम करता है। 250 नहीं रहता है, 220 के आसपास रहता है नॉर्मली, बट 250 भी अगर एज्यूम करते हैं तो 36 ड्रम का आपको पीस आएगा। एक ड्रम वही 200-250 के बीच में रहेगा जो आप एक एक यूज करेंगे। तो एक तो ही ये बैच में नरेंद्र जी की लेबोरेटरी चलेगी ना? अच्छा सर 36 टेस्ट एक ही बैच में। वो बोलते हैं ना, टू मेनी टेस्ट विल गिव यू सम कंफ्यूजन्स। अभी एक में एक ड्रम में एक आया, दूसरे ड्रम में दूसरा आया, तीसरे में तीसरा आया, थोड़ा वेरिएबिलिटी। नहीं, दिस इसका इज राइट यू अप्रोच क्या कैन है सर? हाँ नहीं Sorry, ठीक बात है। from a player, I'm telling you, it's a right approach is to get these admission companies to have their own big or have your own big lot drum established there, water your tanks established there, to have that नहीं consistency जो सर कह रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी रुपेश जी बिल्कुल ठीक है। यू कैन पॉइंट इट आउट, कमेंट में आप डाल सकते हैं कि ये है, तो इट कैन बी लुक्ड इनटू। एनी अदर पॉइंट्स सर? मुझे लगता है सर आज इतने पे ही करना चाहिए। उसके बाद एक मटेरियल हमारा रह गया फाइबर्स, उस पे अगर कुछ कमेंट्स वगैरह कोई कर सकते हैं। हेलो बोलिए, आप लोग बोलिए। सर फाइबर्स है, उसके बाद कंक्रीट शुरू हो जाएगा। कंक्रीट का तो एक अलग सेशन हमें रखना पड़ेगा बिकॉज इट इज मतलब वी हैव टू टेक। डॉक्टर रमन, इट्स बीन 2 hours, ऑडियंस भी उतना ही ग्रैब कर पाए तो बेटर है। We can have another session. Dr. Roja will be kind enough to give another Sunday. I know ठीक we है, have Sunday. फाइबर्स में कोई ज्यादा नहीं है, सो लेट अस स्टॉप इट हियर। जी सर। सो सर वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम आवर लिंक्डइन, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। कुछ एल्कलिनिटी के बारे में है। एक में कमेंट आया, ओपन करिए क्वेश्चन, ओपन करिए। हाँ सो सर, सर दिखाई देगा ना क्वेश्चन? हाँ जी, मैं सर आपको पढ़ के सुना देता हूँ, विजिबल नहीं होगा। वो दिखाई नहीं देगा, सो दैट आई कैन रीड इट। हाँ दिखाई नहीं देगा सर। हाँ जी, हाँ दिखेगा रमन जी, क्योंकि हाँ एक जी। दो क्वेरी और आई हुई है मेरे पास भी। हाँ तो ठीक है। मैं सर एक क्वेरी है हमारा, कैन वेट फ्लाई ऐश बी परमिटेड इन कंक्रीट? वेट फ्लाई ऐश नहीं, वेट फ्लाई ऐश कैसे परमिट होगा? वेट फ्लाई ऐश
उसका अपना स्पेसिफिकेशन है, LOI दिस दैट, सो उसमें वो कंप्लाई नहीं करेगा ना, जी सो इट कैन नॉट बी परमिटेड। मॉइस्चर कंटेंट का लिमिट है सर, और आपने वैसे ही बताया वो फ्लाई ऐश का कोड भी यू आर वो रिवाइज होने वाला है, बट अब कब होगा, इतने काम है BIS के पास में, लिमिटेड ऑफिसर्स हैं, लिमिटेड फील्ड में भी मतलब कंट्रीब्यूट करने वाले भी BIS पैसा देता नहीं है BIS में काम करने के लिए, ये सब चीजें तो लिमिटेड लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जी सर, तो मतलब सब चीज तो एक साथ नहीं है। BIS इज डूइंग सो मेनी वर्क, so many नहीं good सर, work. as a civil engineering fraternity we are all grateful to you people like you जो contribute कर रहे हैं कोड में। we know के उससे कुछ मतलब it is a out of मतलब सेवा का ही काम है ये सारा। so हाँ हाँ we are grateful to people like you ये कर रहे हैं सर। बट क्वेश्चंस हैं सर, मतलब मैं सारे रीड कर देता हूँ, आप बताते रहिए। एंड देयर इज अ क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ TDS कुछ लिखा है सर, वो आपने आंसर कर ही दिया आई थिंक। हाँ, वो लिमिट है, वो सॉलिड कंटेंट का, वो TDS के रूप में नहीं होता है। हाँ जी जी जी। सो आई थिंक विनीत जी आपके पास क्वेश्चंस हैं? या देयर इज अ क्वेश्चन कि UHPC के कुछ इंक्लूजन्स हैं इसमें, या फिर देयर इज डिफरेंट कोड कमिंग फॉर, बिकॉज प्री टेस्ट का हो गया, ऐसा स्ट्रक्चरल कंक्रीट का भी हुआ है, तो एनी विल इट बी एडेड और विल द न्यू कोड कमिंग फॉर UHPC? UHPC के लिए सेपरेट कमिटी बनी है, और UHPC के 2 स्टैंडर्ड आएंगे आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ दैट स्टैंडर्ड। एक टेस्ट मेथड का, बिकॉज टेस्ट मेथड इज ए लिटिल बिट डिफरेंट देन द रेगुलर कंक्रीट टेस्टिंग, और एक आएगा कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग के लिए गाइडलाइंस। ओके, concrete proportioning is a little bit different than the conventional concrete mix proportioning explained in 10262. तो 10262 की तरह नहीं होगा UHPC. It will be based on the particle size distribution and this packing density theory. Okay, so packing density theory and particle size distribution and selection of materials and all that. So that will be based on all those principles. So we will be drafting that standards. So let us see when it is coming. But इसमें inclusion नहीं है, because that is not a regular concrete and regular materials which we are included here in this standard. Only these materials will not suffice in UHPC. Some other materials with some other specifications will have to be added in UHPC. So that will have a different standard altogether for concrete mix design. And then once it will be a little bit relatively available and being made everywhere, then structural design standards will also become, because the ductility and their structural performance will be different than the conventional concrete which we are making, and the stress block parameter and the modulus of elasticity, creep, shrinkage, all those behaviors will be different for UHPC. So we need some data. We need all these data for having a structural design process also, and in which the data can be used as an input for structural design. So it's not a part of this standard IS 456 structural concrete code of practice. Many comments. Few of the comments are from Mr. Avinash Prajapati, is Assistant Manager QAQC at GMRC. So one comment is regarding what admixture query came. He wrote that to make it cheaper, local admixtures players basically do the same. So drum में there is a chance of manipulation, as per his comments which I received on LinkedIn. And another point which he raised is actually if my silica fume increases more than 50%, then it will increase the ASR, chloride, and sulfate. This is one of few of the comments which we have received on the. This is for the information of the panel actually.
So I think one of the queries clarified Vinit, regarding UHPC. okay. Yeah, Vinit, UHPC we have already covered actually. Oh, yeah. that comments already. नहीं वो clear And हो गया है. regarding that, I'm just giving. what Avinash ji is telling, I was also about to add that there are multiple, many company admixture companies in the industry, and the panelists must not have the idea what people are doing. So drum to drum, maybe they have taken in consideration because of the To reduce, feedbacks to received. increase the quality assurance. Yeah, See, yeah. one of the pillars in this 456 is quality assurance. So I probably Rupesh sir, to increase the testing and to ensure quality control and assurance is on a higher side. Probably this drum word has been So, used. so So this is they may have one of the taken. remarks actually. Few of the They remarks may which have have taken, Mr. Avinash Prajapati have. they must have taken feedbacks from the admixture companies also, and I believe I would thank the companies who have supported this. They are confident that from each drum you can have a sample, so that's why they have put There is in. one But query actually has written obviously again and again. If operational side anything is about uh, yeah, Raman ji, just because किसी की query आई है, 2 बार yeah, लिखा yeah. हुआ है. Sure, sure, sure. Again, he has asked if Okay. anything about the maximum limit of TDS, or what about TDS, sir? TDS of water, because this is one of a area, gray area, जहाँ पे people say TDS above 1,000 पे get a RO plant established, or we want 500 below TDS. So, Oja साहब, if you can नहीं, किस पे क्या मैं सुन नहीं रहा था, मैं कुछ दूसरा देख रहा था. हाँ TDS बताएं. of water के ऊपर पूछ रहा है वो कि कोई लिमिट. टीडीएस टीडीएस का सच लिमिट तो नहीं है ना. हाँ. तो ये 1 मिनट, वाटर का अभी हमने डिस्कस किया था ना. सर अभी करंट 456 में नहीं है टीडीएस, बट आप जब पोर्टेबल वाटर का कोड रेफर कर देते हो तो उसमें टीडीएस है. नहीं, आपको नहीं, एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन वाटर एज ए मिक्सिंग वाटर एंड क्यूरिंग वाटर में टीडीएस एज सच नहीं है. उसमें प्रिलिमिनरी के लिए है आयल एंड ये डिटर्जेंट, कलर, ऑर्डर, पीएच वैल्यू, ह्यूमिक मैटर्स, और इसमें है परमिसिबल लिमिट जिसको टेस्ट करके निकालेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सल्फेट, क्लोराइड और सस्पेंडेड मैटर. सो दीज आर द लिमिट्स, एंड देन अल्कलिनिटी एंड एसिडिटी है. तो टीडीएस एज सच नहीं है. ओके. टीडीएस वो पीने के लिए हम पोर्टेबल वाटर में टीडीएस आता है. जी. यस यस. डॉक्टर साहब और कोई कमेंट्स हैं? मतलब मुझे लग रहा है मैं जो नरेश जी के कमेंट्स आप ले रहे हैं अविनाश जी के, दैट आई हैव ऑलरेडी sent him the link to join, but Yeah, he but has he has not not joined. joined. Last एक query है Mr. उदित Yeah. जगदीप जनगीत जी हैं. Is there any impact of silicate based curing compound in concrete, and up to what extent, if it is? Oja साहब, if you can enlighten the. क्या what is the Sir, is there any impact of silicate based curing compound in concrete? अभी हमने क्यूरिंग कंपाउंड पे कुछ बात नहीं किया है. हमने नहीं नहीं करा सर. क्वेश्चन आ गया तो मैंने कहा अगर ये है तो एक क्वेश्चन आया हुआ है. आप नहीं, अब तो सिलिकेट बेस्ड क्यूरिंग कंपाउंड का So मुझे we अभी राइट नाउ. सिलिकेट बेस्ड क्यूरिंग कंपाउंड जो है वो अभी जो रिलेवेंट स्टैंडर्ड एएसटीएम है, एसीआई 309 को कंफर्म नहीं करता है वो. पर हाँ, इंडस्ट्री बहुत जगह यूज कर रही है वो. इट इज नॉट कंफर्मिंग टू 309. ये बात हमने पंच साहब से की भी थी, तो उन्होंने बोला क्यूरिंग कंपाउंड का कोड बनाना बहुत जरूरी है, बनाते हैं इसके बारे में. चलिए सर, किसी की क्वेरी आई हुई थी तो अच्छा है, क्लैरिफाई हो गया. नहीं, वो यूज कर रहे हैं सोडियम सिलिकेट, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज एज ए क्यूरिंग कंपाउंड, बट मेनी फेलोज आर यूजिंग इट. नहीं, आई थिंक मेनी क्वेरीज हैव बीन क्लैरिफाइड. So sir, I think थैंक यू. Dr. Saab, I think we should wrap up Yes, because it is definitely. already 4:30. So, sir, thank you everyone for joining. Thank We you, had thank an you everyone. excellent deep dive into IS 456 led by Dr. P.N. Ojaji, who had
graciously given all the answers to everybody. रुपेश And जी thank you for आप your किस time. ऑर्गेनाइजेशन में हैं? सर लास्ट टाइम मैं आया था तब मैं कल्पतरू में था, वापस मैं अभी एलएनटी में आ गया. So I had LNT B&M. Oh, so nice. Coming. Okay. Okay. So shall we close? Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We will just Okay, namaskar to all of you. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Dhanyawad, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Thank sir. you to all the listeners. And thank you, sir. I thank Bachani sir, Rupesh ji, Abhinash sir, NK Goyal ji, Sudarshan Sharma ji, and my friend and co-host Dr. Vineet Bajaj. We are signing off for now. And I would request all the viewers to follow our channel, Concrete Engineers Association, on YouTube, LinkedIn, and Instagram. Thank you, sir. Thank you all.